बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू माय पीपल, माय फैमिली? Today we are going to install Oracle FX 20.2 and ORDS 21.3 with database 21C Express Edition pluggable in Windows 10 InshaAllah quickly। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle FX 20.2 और ORDS 21.3 को database 21C एक्सप्रेस एडिशन प्लगेबल के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ फोल्डर इन सी ड्राइव विद द नेम 21C XE _ 20.2। सबसे पहले हम सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 21C XE _ 20.2 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम का। एंड अंडर दिस फोल्डर वी फर्दर क्रिएट टू फोल्डर विद द नेम DB एंड ORDS। Now extract Oracle Database 21C Express Edition। Oracle Database 21C Express Edition को जो है वो extract करेंगे। Extract ORDS 21.3 in ORDS folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ORDS folder। अब हम ORDS 21.3 के फोल्डर को extract करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। Unzip Apex 20.2 folder in 21C XE _ 21.2 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder। अब हम Apex 20.2 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे 21C XE _ 20.2 के फोल्डर के अंदर, ताकि हमें एपेक्स के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना ना पड़े। Before installing Oracle Database 21C Express Edition, we have to uninstall any other Oracle Database Express Edition or any other database with the SID XE from our target system, because this installer will use SID XE for its database creation, and SID other than XE will not entertain। Oracle Database 21C Express Edition को इंस्टॉल करने से पहले हम कोई भी Oracle का डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन जो है उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, या कोई और डेटाबेस जिसकी सेट जो है वो XE है उसको भी अनइंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि ये जो डेटाबेस का वर्जन है ये सेट XE को बनाएगा डेटाबेस को इंस्टॉल करते हुए। XE के अलावा कोई दूसरी सेट जो है वो नहीं बनाएगा। और The Java version which we are using is Java 8 update 211। जो Java का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है। We have already downloaded Oracle Database 21C Express Edition। However, you can download from this link। हमने Oracle Database 21C Express Edition को जो है वो पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। आप Oracle Database 21C Express Edition को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर सकते हैं। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। हिट नेक्स्ट का बटन दबाएं। चेक ऑन आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट रेडियो बटन। हिट नेक्स्ट बटन। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट रेडियो बटन पे चेक लगाएं। नेक्स्ट का बटन दबाएं। Now define installation path while hitting change बटन। तब्दीली का बटन दबा के जो है वो हम इंस्टॉलेशन का पता देंगे, और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। हिट नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट का बटन दबा दें। Define password and confirm password for sys system PDB and PDB admin from your choice। हिट नेक्स्ट बटन। पासवर्ड और confirm पासवर्ड दे दें sys system और PDB admin के लिए अपनी मर्जी से, और नेक्स्ट का बटन दबाएं। हिट इंस्टॉल बटन। इंस्टॉल का बटन दबा दें। Oracle Database 21C Express Edition
Pluggable as installed at finish button Oracle Database 21C Express Edition Pluggable जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश का बटन दबा दें। नाउ ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रीच वेयर एपेक्स फोल्डर इज अवेलेबल। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ एपेक्स का फोल्डर मौजूद है। एंड व्हेन वी रीच देयर रन दिस कमांड, जब हम वहाँ पहुँच जाएं तो ये कमांड चलाएंगे। नाउ कनेक्ट विद sysdba, कनेक्ट होंगे sysdba से। नाउ वी विल चेक SGA. Now we will check a pluggable database status, whether it is in read-write mode or not. If it is in read-write mode, then we can move forward. If not, then we have to change its status into read-write mode first and then move forward. अब हमने pluggable database का status चेक कर लिया, जो कि read-write mode में है। अगर ये read-write mode में नहीं होता तो पहले हम इसको read-write mode में लेके आते और फिर आगे बढ़ते। Now we will run this command show pdbs. We run this command before every Apex script to make sure that whether we connect with a pluggable database or not. If we connect with pluggable database, then we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database first and then run Apex script. And when we are connecting with a pluggable database, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with pluggable. Then we have to connect with sys user again. Now we will install Apex by running this command. शो पीडीबीएस की कमांड हम तमाम एपेक्स के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम एपेक्स का स्क्रिप्ट चला सकते हैं। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हमें प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर हम एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। और जब हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हो तो ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर लिखा हुआ आ गया। अगर सेशन ऑल्टर लिखा हुआ नहीं आया तो हमें दोबारा सिस के यूजर से कनेक्ट होना पड़ेगा। Oracle Apex 20.2 है इंस्टॉल। Oracle Apex 20.2 है वो इंस्टॉल हो चुका है। Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे। User will be admin. Provide email and password from your choice. यूजर जो है वो एडमिन रहेगा। ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दीजिएगा। नाउ वी विल रन दिस कमांड। अब हम ये कमांड चलाएंगे। प्रोवाइड पासवर्ड फॉर एपेक्स लिस्नर एंड एपेक्स रेस्ट पब्लिक यूजर फ्रॉम योर चॉइस। पासवर्ड देंगे एपेक्स लिस्नर और एपेक्स रेस्ट पब्लिक यूजर को अपनी मर्जी से। Now we will unlock Apex public user. अब हम Apex public user को जो है वो अनलॉक करेंगे। Exit this command prompt. Open new command prompt with administrator rights and reach where ORDS folder is available. अब हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देंगे। नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है और वहाँ जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। When we reach there, run this command. अब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन पाथ देंगे जहाँ पे हम ORDS को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। Enter, enter, enter. Now define port. My port is 1523. Enter, enter. Now provide pluggable database name. Enter, enter. Provide password and confirm password for ORDS public user from your choice. Password और confirm password दे दें ORDS public user को अपनी मर्जी से। Enter. एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम विल बी सिस। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम जो है वो सिस रहेगा। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देना अपनी मर्जी से। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फ्रॉम योर चॉइस। एंटर।
enter, 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 enter. Provide password and confirm password for Apex public user from your choice. पासवर्ड और confirm password देंगे Apex public user को अपनी मर्जी से. enter. Provide password and confirm password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. पासवर्ड और confirm password देंगे Apex listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से. enter. Now copy images folder from the Apex installation folder. कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को Apex के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से और उसको यहाँ चस्पा करेंगे एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ. Enter. Now provide a path to Apex static resource location till images folder. अब हम Apex static resource location को पता देंगे images के folder तक का. Enter. Oracle Apex 20.2 and ORDS 21.3 with database 21C Express Edition Pluggable has installed in Windows 10. Oracle Apex 20.2 or ORDS 21.3 database 20